Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. And this is Thursday at 4 क्योंकि Friday को फिर से छुट्टी है, तो we are doing this Thursday at 4. I want to know all of you very good afternoon, good evening. Virendra Singh, Narendra Mulani, great to see you also here. Narendra, you have been doing fantastic. I have been seeing your post on the mentorship telegram and it's fantastic to know that. Anurag, very, very good evening. Ashok, Ashutosh, Ashwin, all of you, very warm welcome. It's fantastic to have all of you on this wonderful day. So what a week it had been. We are going to look at markets. Deepak, great to see you also here. And it's a wonderful week where markets have continued to move on the upside throughout the week. And it has been 9 trading sessions, not a single close. Nifty has given below prior candle low. इतना सा सिंपल टेक्निक कैंडलस्टिक का अगर आपने फॉलो किया होता तो आपको पता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर का है. मेनी पीपल हैव कम अक्रॉस, have been trying to catch a top in this market, but trust me, in this market the only way you can make money is to ensure you are in the direction of the trend. You are not trying to catch a top, you are just using that dips as an opportunity to enter. लेकिन इतना easy नहीं है क्योंकि dip भी बहुत shallow है. You can see Nifty has not even corrected by more than 100 points in this rise, because there has been a rotational buying. That is what we can see. Okay, it started, like I was talking even on CNBC today, I was talking about it, that earlier it started with Reliance Industries. Then went on with real estate stocks that we started seeing up by 5-7%. Went with auto stocks, Tata Motors up by nearly around 7-8%. We can see pharma stocks now participating, something like Divi's Lab up by 10%. So the participation is happening across the sectors. Maybe metals can be the next sector. So it's a rotational buying daily. So हर दिन एक ऐसा स्टॉक होता है जो यहाँ से मार्केट को करीबन ऊपर लेके जाने में हेल्प करता है. एक ऐसा स्टॉक, ऐसा सेक्टर जो सपोर्ट कर रहा है मार्केट को. So every day there is some stock or the sector that is supporting, and that's a very healthy sign because the buying is now across the board. Especially also we can see the stocks that have been beaten down sharply have started showing sharp recoveries on the upside. That's a sign that this time the rally जो हो रही है ये broad based है. Now you might be thinking ये तो होने के बाद पता चल रहा है. नहीं, होने के पहले जब 17,060 17,060 का लेवल ब्रेक हुआ था, एट दैट टाइम आई टर्न सुपर बुलिश कि यार मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है एंड वी कैन हेड मच हायर फ्रॉम हियर ऑन. एंड स्लोली स्टडीली मार्केट कंटिन्यू टू राइज. बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, दैट द ओवरऑल मोमेंटम इज स्टिल नॉट पिकिंग अप. मोमेंटम का मतलब है हर रोज हम देख रहे हैं कि 80 पॉइंट्स रैली हो रहा है, 90 पॉइंट्स रैली हो रहा है, लेकिन स्पीड नहीं है. विक्स का अगर आप वैल्यू देखोगे, इंडिया विक्स इज स्टिल वेरी डाउन. इंडिया विक्स इज जस्ट अराउंड दैट 12.5 मार्क. तो पैसा कमाने के लिए आपको ऑप्शन बाय करके कमाना है, फिर भी मुश्किल है पोजिशनली, बिकॉज ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिटोरिएट हो रहा है आपके साथ ऐसा. लेकिन साथ ही में ऑप्शंस सेल करना भी रिस्की हो गया बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत कम है. फिर भी ऑप्शन सेल करके इस वीक में पैसा बनाया जा सकता था पुट ऑप्शन सेल करके. कॉल ऑप्शंस बेचने वालों जो थे, मतलब देयर वर पीपल हु सोल्ड कॉल्स एट 17,500 17,800 and all of those people have actually paid very heavy prices because they didn't expect Nifty to rally by 8 consecutive days, and there are so much of pessimism around that everyone was talking about. Despite of that, Nifty rallied. So for me, I think we have formed a very important low for coming weeks or months, and this low which is formed on Nifty is going to be protected. So 17,000 का level, 16,800 का level, I don't think we will see those levels over months now. So ऐसा लग रहा है फिलहाल तो दोस्तों. लेकिन क्या है, मार्केट में मोमेंटम अगर चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो हम उससे देखेंगे. तो चलते हैं आगे, अभी देखते हैं मार्केट का. Vidyut is saying today's level worked extremely well. It works like magic, right? The levels that I talk about, the levels that I give is exactly what market is doing. बहुत अच्छे से चलता है अगर आप ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं.
And I want to know from you to people, are you subscribed to the channel so that you keep getting such kind of alerts on videos that we are publishing? So do that. And if you are there on YouTube, you can join me on the Zoom also. I'm taking a very quick poll. I want to know from you all, what do you think is the Nifty trend in the coming week? Nifty trend आने वाले week में क्या लग रहा है यहाँ से? Do you think it's going to be up? It's going to be down? क्या लग रहा है? Okay, so I can see so many of you are expecting the trend. So it's going to be a decisive move. That is what the people here are predicting. So that's interesting. I'm ending the poll right now. Let me just share across the poll. So Nifty is looking bullish with 69% people expecting it to go up. That's a very interesting phenomena, क्योंकि ये level हमने last बहुत time के बाद देखा है जहां पर इतना bullishness फिलहाल है 70% का. चलिए ये स्टॉप करता हूं मैं यहाँ पर और चलते हैं चार्ट पे, देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा है ये राइज और इसमें क्या देखना चाहिए हमें फिलहाल के लिए. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट वॉल्यूम प्रोफाइल, उसके बारे में बात करेंगे. पहले तो देखते हैं चार्ट पे. आर यू देयर विथ मी एवरी वन ऑफ यू? आर यू एबल टू सी द चार्ट? एंड गाइज मेक इट एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल so that we know how it works well. So यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, you can clearly see on the chart here, this is the rise. Wow, that is some rise, right? यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई भी यहाँ पर डिप ही नहीं है मार्केट में, सिंपल वे है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बताता हूँ. Very interesting observation that you will see on the chart is the maximum number of downward candle that has formed is 3 red candle जो बना है. The max red candle मतलब 3 घंटे से ज्यादा मार्केट करेक्ट नहीं हुआ है, not more than 3 hours. It's very interesting to see that. यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर 3 रेड कैंडल बनी मार्केट में. यहां पर अगर आप देखेंगे 1 रेड कैंडल, ये वाला जस्ट डोजी जैसा था. उसके बाद में 3 रेड कैंडल का करेक्शन, 3 रेड कैंडल का करेक्शन, 3 रेड कैंडल का करेक्शन. वाओ, व्हाट अ ब्यूटी इट इज दैट द मार्केट हैज करेक्टेड ओनली एंड ओनली बाय 3 रेड candles, not more than that. That's how the correction in this entire up move had been. So people who are trying to catch a top here, I am asking you, why are you trying to do that? Just because market has gone from a lower level where around 17,000 से लेके 800 पॉइंट का रैली हो गया, but you are not in the trend, then you can't really enter the trend. So in this kind of a market, it's very important that you understand you cannot enter the trend unless you are already in the trend, because the correction has been very shallow. And if you look at the RSI on an hourly chart, RSI had been on the overbought zone above 70 all the way. So अगर RSI देखा होगा तो आपने फिर भी आप बाय नहीं कर सकते थे मार्केट को. So this kind of phenomenon happens. यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर you have to ensure you are using option strategy to enter the market. So वो बहुत ज्यादा important है, because ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अंदर आप मार्केट से ट्रेड निकाल सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे ऑप्शंस को यूज करना चाहिए. सेलिंग पुट ऑप्शन हैड स्टिल मेड मनी इन दिस एंटायर एक्सपायरी ऑफ टुडे. लग रहा था रिस्की, लेकिन पैसा फिर भी यहाँ पर बना है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि ओवरऑल मेच्योरिटी ऑफ द ट्रेंड क्या है. तो चलिए देखते हैं फ्रॉम द NeoWave पर्सपेक्टिव कि व्हाट इज द ट्रेंड लुकिंग, इज इट मैच्योर्ड इनफ और इज देयर मोर रूम लेफ्ट. सारी चीजें देखने की, समझने की कोशिश करते हैं. इफ यू आर लुकिंग एट दिस एंटायर अप मूव, लेट्स गो ऑन अ स्मॉलर 15 मिनट चार्ट. आई एम गोइंग टू मार्क द इंटरनल्स ऑफ दिस अप मूव एंड उसे मार्क करके हम कोशिश करते हैं समझने के लिए. यहाँ पर if you're looking at this 15-minute chart, you can see from here, this is the up move that we are seeing. यहाँ पर एक चैनल बनाने की कोशिश करते हैं. Look at this channel that we can draw a trend line here.
and we'll draw parallel to this. This is the parallel trend line that you can see it on the chart here. Now over here, यहाँ पर momentum तो कम हो रहा है. That is what we can make out because the speed is reducing. We can see some negative divergence. लेकिन negative divergence का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर जाके sell करो. The market will still buy on dips, and ensure that you are using this opportunity of dip to buy until and unless we close below the prior candle low. तो चलिए एक कैंडल की बात करते हैं. बहुत टाइम हो गया, हमने देखा नहीं. कैंडल में वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, इट हैज बीन, मंथली चार्ट पे भी देखते हैं हम. इफ यू लुक एट द मंथली कैंडल, वी आर नाउ मैनेजिंग टू रिवर्स द मंथली ट्रेंड ऑल्सो ऑन द अपसाइड. अभी इट्स दिल्ली अभी दूर है, बट इफ यू लुक एट इट, 17,800 प्रायर मंथ का हाई था. अभी अगर निफ्टी नेक्स्ट 15 दिन में 17,800 के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो मंथली ट्रेंड विल रिवर्स बैक अप. Weekly trend, if you look at it, it has been definitely on the upside. Okay, after consecutive 16-17 weeks, weekly trend had been on the upside. If you look at the daily trend, the daily had been on the upside. Not a single candle low has been breached. Closing तो जान दो, breach भी नहीं किया है prior candle low के नीचे. This is one of the simplest, most objective way of seeing the overall candle. After this, if you are looking at, now we will come on to the 15 minutes chart. 15 minutes में ये रैली भी देखो आप. यहां से अगर आप देखेंगे, this was outside candle which does not change the trend. Not a single candle has actually closed below prior candle low after this fall, earlier fall which happened. So now what is the wave count of this internal structure is suggesting is what I want to show across to you. तो यहाँ पर अगर हम internally analyze करके कोशिश करें कि भाई क्या बन रहा है, तो looking at the structure, it seems that this was, are there people who want to learn about NeoWave? Okay, so this is possibly wave A that we got. Wave B जो हमने discuss भी किया था Tuesday के webinar में, we had wave C here. यहाँ पर wave X complete हुआ. Again we had a rise on the upside, possibly in the form of wave A. We had fall in the form of wave B. This was C. This was D. ये आज का move था was classic E. This was wave F, which came on the downside. E is equal to C. That is what you can clearly see. After F, this is now possible G leg. So अगर हम इस वेव के पैटर्न से जाते हैं, ओके, यहां पर G leg है. So we have A, B, C, D, E, F and G, which means that this low form today is now the most important low which is there. ये कौन सा लो लेवल है? 17,000. आज का लो है 17,729 का. So 17,729 is the most important low that Nifty should protect. Okay, if Nifty breaches and closes below 17,729, we can say that something is changing again. Okay, but for now that's the low which I'm going to keep a very close watch. And ये अगर G complete हुआ and we get a sharp fall below it, top at least over short term is formed. But if we get a slower fall below it, then we can say that it's again an X wave. So what will decide? So as per NeoWave, there is a concept known as two-stage confirmation. So here we are seeing that NeoWave is suggesting we are in diametric pattern and prices are currently in wave G. Monday is going to be important because if 17,729 is breached, which is today's low, right? We can then expect retracement, or we can then expect correction to start. Is it clear? Any questions here?
Any questions? We can clearly see this. This is interesting, right? क्योंकि यहां से पता चलता है overall two stage confirmation will happen below this low. So एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, ये पूरे के पूरे राइज में प्रीवियस लो जो बना है 15 मिनट्स में, इट इज ऑल्सो नॉट ब्रीच्ड. पूरे के पूरे राइज में 15 मिनट्स का लो भी ब्रीच नहीं हुआ है. सोचो ना. So this level is protected, this level got protected, this level is protected. So every rise had been on a higher high, not breaching the prior low area. And 17800 पहले भी hurdle था, which is around the wave X, and 17756 is working like amazing Gann level, जिसके बारे में हमने बात की है. I'm not asking, so guys, hear me out very clearly. I am saying that wave theory is suggesting this as the possibility. लेकिन एक चीज समझो दोस्तों, यहां पर टॉप नहीं पकड़ना है. अगर 17720 का लेवल ब्रीच होता है तब हम बोलेंगे कि यहां टॉप बना है. जब तक ये नहीं होता है, this market will be still buy on dips, buy on dips and buy on dips. And I have been riding this trend from 17,060. It has been one of the best trend that you could have ridden all over on the upside. Not a single time this has actually closed below prior day low. Simple trend following method अगर आप follow करते, you don't have to actually do anything in this kind of trends. You just have to buy, hold and sit tight. Now question दिमाग में, कौन से basis पे 17,000 17,100 पे buy करना चाहिए था? Again on the basis of wave theory, time cycles, if you are using that, and those concepts. Now why I am more keen of expecting at least few days of down movies, because हमारा 55 days का time cycle is getting due on 18-19th of April. तो इसका मतलब at least 3 से 4 दिन का down move possible है, आ सकता है, लेकिन price action confirm करने के बाद ही. Are you with me? Are you understanding? Because I am seeing very less people are talking today. So I thought I'll just check. And यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी होगी, बॉलिंगर बैंड्स, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बॉलिंगर बैंड्स के ऊपर भी है. तो यहां पर आई एम गोइंग टू अप्लाई बॉलिंगर बैंड्स वेरी क्लियरली. देखते हैं बॉलिंगर बैंड्स के बेसिस पे मार्केट क्या करते हुए नजर आ रहा है. सो इफ यू लुकिंग एट बॉलिंगर बैंड्स ऑन वन डेली चार्ट, just give me a second. I'm going to hide it across. Everyone, are you aware about what I have done right now? समझ में आया आपको? Let me now go back on the daily time frame, and I'm going to look at the bands, how it has been moving. We can clearly see for the very first time, Nifty has managed to close above the band and has taken out the high of the band, which means there is a possibility a trend is going to start on the upside. However, we are still slowly and steadily moving up, so the trend is a buy, but we are already 9 days in a row of the rally. So हो सकता है हमें 2 दिन 3 दिन 1 दिन का correction मिले, but do not try to catch a top here, because when the trend is strong, you ride it, you don't catch a top. So Bollinger bands on hourly chart also, if you check, it has continued to be very clearly on the upside, क्योंकि मिड बैंड ऊपर जा रहा है, अपर बैंड ऊपर है, लोअर बैंड तक आया ही नहीं है प्राइसेस पूरे ट्रेंड में. द ट्रेंड इज डेफिनेटली ऑन द अपसाइड इवन नाउ. आज भी जो सपोर्ट लिया निफ्टी ने वो मिड बैंड के आसपास लिया, वहीं से रिवर्स हुआ back on the upside. So that's the overall trend of the market looking at the chart here. So it's very interesting if you can combine this concept of Bollinger bands, along with that, if you can combine that concept of how to form option strategies, and साथ ही में volume profile देखते चलिए. I have that chart ready also on volume profile. Let us look at volume profile and let us understand very clearly how to trade and where is the resistance as per price action of volume profile. This is open interest profile.
we can see that there are supports created at every level. Open interest दिख रहा है guys. दोस्तों इसके बारे में बहुत डिटेल में हम वैसे भी बात करने वाले हैं वीकेंड के ट्रेनिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम में. हाउ मेनी ऑफ यू आर अ पार्ट ऑफ इट? आई वांट टू अंडरस्टैंड विद अ बिग थम्स अप. People on Zoom, if you can just raise your hands, I will know you are a part of this amazing program happening on the weekend, which is on options trading. Okay, I can see so many of you is there. Uma is there, Ayushi is there, Bhagirath, you are there, so many of you, fantastic. So ये चीज जो हम करने वाले ना, ये बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे इसे हम. So don't worry about it. We are going to look at it in a much detailed fashion. The dates of OTA is 15th, 16th April, Saturday, Sunday. This weekend we have OTA, option trading using technical analysis, जहां पर ये सब चीजें हम डिटेल में करेंगे. तो फिलहाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल के बेसिस पे वी कैन सी अ ह्यूज सपोर्ट विच इज एट दिस लेवल एंड ऑन द पुट साइड. लेकिन आज एक्सपायरी था तो ये लेवल्स चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट वीक के लिए. बट स्टिल we can see 18,000 is a hurdle. That is for sure. It's not going to be removed that easily. Call side पे भी इधर मल्टीपल क्रिएशंस थे, लेकिन आज की एक्सपायरी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा. इसीलिए हम देखेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्या हो रहा है. सी वॉल्यूम के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे बाद में. ऑन ओवर द वीकेंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, जहां पर ऑप्शन बाय कैसे करना है, कैसे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज फॉर्म करना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी विल बी डूइंग. If you're looking at this volume profile, can I say the highest volume now is seen around the area of 17,900. So 17,900 is very interesting level, because आज ऑप्शंस एक्सपायरी था, तो हमें आज के लिए OI डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी एक्सपायरी के बाद, लेकिन वॉल्यूम डेटा तो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Are you able to see this volume profile, guys? Are you there with me? I want more interaction. क्या मार्केट के अप मूव में आपकी एनर्जी खत्म हो गई है? So this is the area of support that we found. This was the area of resistance that we found, and now we are back to this area. Very important, 17,900 area of volume, which is crucial. We call it as point of control. यहां पर निफ्टी आ चुका है दोस्तों, मतलब यहां पर हो सकता है मार्केट का पॉज होगा. ये फ्यूचर्स लेवल है, ध्यान रखना, दिस इज फ्यूचर्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड दिस. करेक्शन इन निफ्टी एक्सपेक्टेड अप टू व्हाट लेवल? आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट. पहले तो हम वेट करेंगे एटलीस्ट एक क्लोज की प्रायर डे लो के नीचे, फिर हम देखेंगे कि करेक्शन कहां तक जा सकता है. Maybe I think correction अगर आएगा भी, it will not go beyond the central power area. This is again a NeoWave logic. The central power area इधर है, तो this is the central power area. That is where the correction can end, which will give you again a classic opportunity for buying the market. Okay, and that's where also the other high volume area exists. Can you see that? So expectation क्या है? Overall trend bullish है. I am not denying that. Post that completion of the trend, we might have correction for 3 days on the downside. Post that completion, we might start again and classic upward movement in the market. That is how it is looking like right now. So यहाँ से वापस से हमारा upward journey शुरू होगा. So ये पूरा path ऐसा बन सकता है basis of wave theory, basis of some concept, and if you look at it, this will also then form a classic head and shoulder pattern. This will become like a head, this will be shoulder, and this will be shoulder that will be formed, and that's how the prices can behave. That's how it is looking like to me. That's the path I am showing all of you over here on Nifty. Is it interesting to see the path of Nifty? अभी ये ब्लू कलर क्या है, ये कौन सा प्रोफाइल का शेप है, all of those things will be, this is a profile, this profile shape is D shape profile. Okay, and यहाँ पर ये कलर क्या है, this is where, so ये चीजों के बारे में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. 15-16 अप्रैल को रिलायंस का वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया याद है दोस्तों,
एक लेवल दिया था 2330 का, और रिलायंस 2330 2350 के आसपास ही उतने दिन से चल रहा है। वो लेवल इतना इंपॉर्टेंट है. It is acting like a magnet for these levels. If you remember, we have talked about it so many times during the mentorship program also and during the webinars also, and it is working so exceptionally well. So ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है रिलायंस के स्टॉक में. लेकिन फिलहाल निफ्टी का जो व्यू है, this is how it is looking like. So Nifty volume profile is going to give you the big players activity. Okay, remember that volume profile gives big player positions, and you have to ride in direction of these big players. So it is very crucial for you to understand this concept so that you are not applying it incorrectly. बहुत जरूरी इसको अप्लाई कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, कैसे देखना है, all of those things I am going to do that. So we will be looking at these aspects in a much detailed fashion along with a clear trade setups. Okay, so one more thing I would like to also tell you is that ये पूरे रैली में बैंक निफ्टी is also showing a good strength. आज के दिन में बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया. निफ्टी नहीं चला तो बैंक निफ्टी चला, बैंक निफ्टी नहीं चलता है तो रिलायंस चलता है. मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है दोस्तों. तो आपको ये समझना है कि ये मार्केट में रोटेशनल, that's why it is called as a rotational buying. That is what we are seeing here. Is it interesting, every one of you? Are you able to make sense out of this? वॉल्यूम प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा है कि ये वॉल्यूम के आसपास हम आ चुके हैं जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स की एक्टिविटी हुई है, एंड दिस इज वेरी क्रूशियल. I have worked with hedge funds. I have seen how they create volumes, how they do that, and it's going to be amazing. It's going to be simply fantastic. Okay. So guys, I just want to ask you all, how many of you are excited for the weekend 2 days of power pack options master class जो हम करने वाले? Are you guys excited about over the weekend कैसे करने वाले? We look at stocks, we look at volume profile on Reliance, Bajaj, Tata Motors, कौन से स्टॉक में एक्यूमुलेशन हुआ है, कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है, कहां जा सकता है, ऑप्शंस पे कैसे हम स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हैं. द प्री सेशन वीडियो इज ऑलरेडी रिलीज्ड फॉर पार्टिसिपेंट्स ऑफ OTTA. Ensure you go through that pre-session video before we meet on this Saturday, which is 15th of April in the morning. So it's going to be very amazing because हम स्टॉक्स भी देखेंगे कहां पर बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी हो रही है, कैसे पता चला, क्या करना चाहिए उस लेवल पे, और कैसे ट्रेड सेटअप्स हम बना सकते हैं. ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनता है तो क्या करना चाहिए, और अगर ऑप्शन सेलर्स मार्केट है तो उसमें कौन से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, ऑप्शन चेन कैसे देखना है, ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे. और बहुत ही इजी है. हमारा फोकस होगा प्राइस एक्शन पे, सिंपल ऑप्शन चार्ट पे हम देखेंगे, Bollinger Bands breakout को KST इंडिकेटर से कंबाइन करेंगे, and then we will look at all of those things. So are you guys interested to know all of this concept? You can be a part of this wonderful training which is there, and it will be amazing that you see here. So I'm also taking up a very quick poll for people who want to be on this journey of learning and trading the market with an edge of understanding these concepts जो बहुत ही कम जन को पता है. So I'm taking a quick poll. Please participate in this poll if you have anything. Anurag Sharma, thanks for that. He's saying, guys, great learning experience. You will have also have Trading Gurukul. You will find lifelong guide. It's a good ecosystem. Thank you for pitching across this thing, and it's going to be amazing. 2 दिन में हम जो करने वाले हैं, उसके बाद एक फॉलो अप सेशन भी होगा हमारा. सो डोंट वरी ऑन दैट. उसके साथ में एक और चीज, मैं आपको ट्रेड सेटअप विथ रूल्स दूंगा ऑप्शन चार्ट के ऊपर. ये स्टेप 1 2 3 4 फॉलो करना है और आपको उसके बेसिस पे ट्रेड लेना है. एज सिंपल एज दैट. ओके, यू हैव टू डू दैट. Ayushi Rastogi has registered for OTTA. Fantastic, Ayushi. Great to know that. And
One more thing that I would like to tell you, we will be looking at Ichimoku cloud with KST indicator, two very powerful indicators that I use personally for trading, which gives a very clear understanding. उसी के बेसिस पे मैंने कहा था कि मोमेंटम मार्केट में कम हो रहा है, ट्रेंड ऊपर का है लेकिन मोमेंटम कम हो रहा है, एंड वैसा ही मार्केट चल रहा है. तो सोचो, अगर आपको पता है ऑप्शंस में कि ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम कम है लेकिन ऊपर है, तो आप ऑप्शन में स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हो. क्या स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हो? सो फॉर एग्जांपल व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड लॉन्ग पोजीशंस ऑन 17800 का कॉल. आई सोल्ड 4 लॉट्स ऑफ 18,000, मतलब 4 लॉट, जस्ट एज एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू. बाय 1 लॉट ऑफ 17800, सेल 4 लॉट्स, 1:4 का रेशियो क्रिएट किया ऑफ 18,000, एंड इट वर्कड आउट लाइक मैजिक. रिस्क क्या था? अगर मार्केट नीचे जाता था, आई डोंट लूज एनीथिंग. आई लूज ओनली इफ निफ्टी गोज अबव 18,050, जो हो नहीं, जो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, which means I will make money if Nifty expires between 17,800 to 18,000, and that happened. So view पता होने के बाद में you can give, it's amazing that has worked. Narendra Mulani saying he is a mentee in the current batch. He made 450% return using Ichimoku Cloud, जो हमने मेंटरशिप में किया है. तो और OTT में हम बहुत डिटेल में करेंगे इसके बारे में डिस्कशन. तो here is the proof, this guy made 450% return. ये हमेशा नहीं होगा दोस्तों, रिस्क भी है, लॉस भी होता है, लेकिन जब पैसा बनाते हैं तो अच्छा पैसा बनना चाहिए. So there is another thing, another feedback from here. Ashish is always available to guide us on wave theory, time cycle in scientific way of forecasting we will come across in this world. Thank you very much. Vandana, please drop in your number and we will get in touch with you. Lunar cycle के basis पे price confirmation नहीं हुआ उमा, because trend इतना strong है. You should combine that with price confirmation right now. Will Nifty correct to 17,000? I have my doubts. मैंने path आपको बताया है. That's how I am looking at it right now. How to roll over options on next month? I'm totally new. Devesh, don't worry. We will do that over the weekend. How to go about rollover of options को कैसे roll over करना है, कैसे hedge करना है, अगर आपके against position जा रहा है तो कैसे उस position को favorable बनाना है, वो सारी चीजें हम करेंगे over the weekend. So TCS का option आपने खरीद रखा है, don't do it just because you don't have the complete know-how. So I would suggest after learning on the 2 days, you can then be a part of, you can then take a systematic trade on how to go about options. So I'm really excited, guys, for the entire 2 days of program. Nifty is very, very important juncture. Monday से next week में शायद correction हो सकता है, लेकिन क्या मैं short कर रहा हूँ? नहीं, because यहाँ पर कोई भी confirmation नहीं है. So I'm not shorting the market yet, but I am cautious. लेकिन fresh positions create करने के लिए मैं put options sell कर रहा हूँ. मैं existing positions already long हूँ 17,060 से, जो मैं trail कर रहा हूँ. So it's fantastic method. This is a systematic way of trading which can give you the best of riding the trend using options or on stocks or a lot of those things. Okay, there is one more question, sir. Can I be a part of OTTA? Yes, you can be a part of OTTA. Links are shared across with you. You just have to be there. I think a few seats are left, not much. So just ensure you are a part of it today. And I was there. Yes, you saw me on ET Now. Glad to know that I was there on CNBC today. Also on ET Now at 2 o'clock. So a lot of discussions happening from there. Shweta, great to see you also here. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. I think I've answered many questions. I'll just check if any of the questions are left across. Volume profile for Bank Nifty अभी नहीं करेंगे यार, time कम है. Weekend पे we will do that in lot of those things. Bikash Gorai, you want to join the OTTA? Fantastic. So Bikash, can you just drop your number here or use the link so my colleague can get in touch with you?
ITC पे simple नहीं था, follow 55 days cycle. 55 days, every 55 days, ITC stocks forms a low and rallies. Simply use that cycle, it's going to be amazing. ET English पे था. Today was ET Now English channel at 2 o'clock. I was there on ET Now English at 2 o'clock. Fantastic. For what questions, Arun and I'm not sure. I missed your questions. Guys, there are so many chats here. I might miss out your questions, so please don't mind. Yes, the moon phase did not confirm price reversal because remember, price and time both are important. Price is in a strong uptrend right now, and even post Purnima, if we are continuing to rally, which means something has changed in the market. That's also a very, very vital information. जो हम करेंगे master of waves में. Can we sell 2 week later option from now? Manan, it depends. You can sell, but कौन सा strike price? आपका stop loss क्या होगा? कौन सा option बेच रहे हो? क्या आप strategy form कर रहे हो? So it depends on all of those things that you have to understand before you have to sell an option. Does it make sense? So just try and understand it first before you take any action, because don't lose money, guys. And in fact, I am even evaluating and trading options on Bitcoin, and it is working amazing. Same strategies, similar methods of time and wave theory and on options on Bitcoin. And I've been evaluating that just as a test, and it is simply wonderful. So उसके बारे में भी और शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में बाद में. आज के लिए इतना ही दोस्तों. So यहाँ पर एक और है. I request all the attendees to join MOTA option trading and master of waves. I urge, if beginners join all courses, I have been there with Ashish sir since October 21. Believe me, your view about the market forecast will change. Thank you very much for that. Bollinger bands के बारे में Arun and I will not be able to answer any more questions here now. So it's going to be taking a lot of time. Okay, thank you very much for joining in, guys. People on YouTube, ensure you are subscribing to the channel, following there, and देखते रहिए. These videos will be published, and I am going to be meeting you on the weekend on Saturday at 10 a.m. In 2 days, you will be loving what we are going to do. Simply changing the way you ever traded options and looked at it in a simple, scientific way. Thank you very much. Have a wonderful weekend.